सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। ये इस कार्यक्रम ओनली एग्जामिनेशन के ऊपर है, क्योंकि टर्म एंड एग्जामिनेशंस अभी चल रहा है 1 तारीख से 5 जुलाई तक। सो आपका इस कार्यक्रम स्पेशली एग्जामिनेशन के लिए हमने रखा है। सो इसमें सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। कैरी ऑन। सो आप इसमें हम लोग आपको एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023। इस एग्ज़ाम्स के लिए आपको पूरा इंडिया में और विदेशी में भी हो रहा है, और इसके लिए तैयारी होना है बहुत ज़रूरी है। हमारा पाठ्यक्रम में बुक्स जितना है, हमारा स्टडी मटेरियल्स उतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल्स में हमने जितना चाहिए उतना पूरा कवर कर दिया है। और हमारा स्टडी मटेरियल्स ऐसे है, आपको इंटरनेशनल संस्थान, सर्वदेश संस्थान, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग संस्थान हमारे को एक आता बेहतर, सबसे बेहतर इग्नू का मटेरियल है। तो इवन आईआईटी स्टूडेंट्स, आईआईएम स्टूडेंट्स, वो भी हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वो बुक्स खरीदते हैं। सो इग्नू का पाठ्यक्रम ऐसे है, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार है। सो बेहतर, बढ़िया है दिस प्रोग्राम्स, ऑल द प्रोग्राम्स। सो आप लोग दिल लगा के पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम को, और उसमें कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इन द फ़ोन नंबर में। हम लोग आपको सवाल का जवाब देने के तैयार हैं। आप anybody wants to call, they can call, because it's a bilingual program, क्योंकि there are some states where English is also widely understood rather than Hindi. So please, anybody, any students or anybody wants to ask any questions about the ongoing examinations, about any problems in hall ticket, exam center, or whatever it is, you are welcome, most welcome to ask. Sir, आप शुरू करो। बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी का हमें ये जानकारी देने के लिए। और जैसा कि आप सबको मालूम है, एग्ज़ामिनेशंस अभी टर्म एंड एग्ज़ामिनेशंस इग्नू के चल रहे हैं, और 1 जून से शुरू हुए हैं, 7 जुलाई तक हमारे एग्ज़ामिनेशंस चलने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे विद्यार्थियों की जो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड परेशानियां हैं या जो उनके इश्यूज़ हैं उनको हम रिज़ॉल्व कर सकें, इसलिए हम ये एग्ज़ामिनेशन फोकस्ड के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। पिछला एपिसोड जो था वो भी हमारा एग्ज़ामिनेशन पे फोकस था। इस बार फिर हम एग्ज़ामिनेशन पे फोकस लेके आए हैं। पिछले एपिसोड में जिन लोगों ने हमारे कार्यक्रम के साथ जो जुड़े उनको ये मालूम होगा कि हमारे रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवेल्युएशन डिवीज़न डॉक्टर वीबी नेगी पिछले एपिसोड में आए थे, और उन्होंने न केवल एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, परीक्षाओं से रिलेटेड विस्तृत जानकारी दी थी सभी विद्यार्थियों को, बल्कि साथ ही जो भी विद्यार्थी जिनकी कोई भी क्वेरीज़ थी या कोई तकलीफ़ थी और वो कार्यक्रम में हमसे जुड़े, जिन्होंने फ़ोन किया, अपनी क्वेरीज़ शेयर करी, उनको भी एड्रेस किया था डॉक्टर नेगी ने। आज उसी कड़ी में हमारे साथ गौरी शंकर जी हैं, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं स्टूडेंट एवेल्युएशन डिवीज़न में। और अभी जैसा कि उन्होंने आपको बताया, एग्ज़ामिनेशंस के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। हम इग्नू में हर एक विभाग आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं डॉक्टर भारत भूषण, जो हैं डायरेक्टर एसएससी स्टूडेंट सर्विस सेंटर। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगी, सर, हमारे जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, टर्म एंड एग्ज़ामिनेशंस साल में 2 बार होते हैं, तो हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, कई बार उनसे चूक हो जाती है, वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सही समय पे भर नहीं पाते, या उनको ये जानकारी ही नहीं होती कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है।
तो इसलिए हम जब भी मौका मिलता है उनको ये जानकारी देते रहते हैं। इस बारे में आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और उनको थोड़ा सा जानकारी जी, दें। thank you, Dr. Bhavna and Mr. Gauri Shankar ji. As you know that this program is a fortnightly program organized by Student Service Center of Indira Gandhi National Open University twice a month. And as Dr. Bhavna has said that if a student he missed the applying for examination, in this we always many times repeatedly we have been requesting to our students that please keep visiting our website, official website, that is www.ignou.ac.in, and all updates are available on this website. Apart from this website, any student can also visit to our regional center's website. Regional center website address is very easy. If you write RC and then place name, you will find the website of our 57 regional centers also. Almost all informations are available on our regional centers websites also. Regarding the question that if a student missed the chance of filling the examination form, we know our system is very flexible system, but I have been requesting repeatedly to our student that flexibility should be used very judiciously. Is there is any call? Yeah, please, we are here to address your query. Please ask your question. आप हमसे बात कर सकते हैं. यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना सवाल पूछिए, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। देहरादून से कॉल है, अगर आप देहरादून. जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम मेरा नाम रोहित है, रोहित सिंह है मैम, और मैम मैं देहरादून से हूँ। जी मैम मेरा 2 महीने पहले ग्रेड कार्ड कंप्लीट हुआ, BAG का कोर्स कोड है मेरा। मैम 2 महीने से मेरा वो नहीं आ रहा मैम, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मैम आगे एडमिशन लेने हैं और मैम फॉर्म भरने, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई एस्पिरेंट हूँ मैं, तो मैम दिक्कत आ रही है मैम। प्लीज़ मैम जल्दी से उसे कैसे भिजवा दीजिए। काफ़ी टाइम हो गया मैम, मैंने पिछले हफ्ते भी कॉल करी थी, तब भी कोई वो नहीं हुआ। ईमेल भेज लिया मैम बहुत सारे, मैम कुछ नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है रोहित जी, हम डॉक्टर भारत भूषण जी से हम निवेदन करते हैं कि रोहित जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और उनको पता है कि उनका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है और उनको अब अपने प्रोविजन सर्टिफिकेट और ग्रेड कार्ड का इंतज़ार है। जी रोहित जी, आपकी जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म हो गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम अपने ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स अपने विद्यार्थियों को इशू कर रहे हैं डेली, और गौरी शंकर जी इस मामले से जुड़े हुए हैं बहुत इसकी तह तक, और उनको इस बारे में बहुत सटीक जानकारी होगी कि हम अब अपने जो ग्रेड कार्ड एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स अपने विद्यार्थियों को भेज रहे हैं, और जिनको नहीं मिले हैं वो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर इन द पाइपलाइन. Maybe your grade card and certificates are somewhere in the pipeline, and very soon you will be getting your grade card. गौरी जी, आप इसमें और कुछ अपडेट करना चाहेंगे बच्चों? एक ही चीज़ मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर भरत भूषण साहब सही कहा था, डेली 5000 ग्रेड कार्ड्स हम भेज रहे हैं हमारे पास। इट में टेक अनदर 2 वीक्स। लेकिन फिर भी आपका प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है आपका? की बात कर रहे थे रोहित जी, आपका प्रोग्राम क्या है? रोहित जी लग रहा है हमसे, रोहित जी आप सुन रहे हैं हमें? BAG ओके, आप एक काम कर लीजिए, आपको BDP result @ignou.ac.in में एक मेल भेज दीजिए। मैं खुद रोहित जी का, मैं उसमें अटेंशन गौरी शंकर लिख लो। BAG ओके, BDP रिजल्ट। यस सर, BAG हम सुन लिया।
आप bdp_result@ignou.ac.in में एक मेल भेजिए, ऊपर अटेंशन गौरी शंकर लिखो, हम आपको अलग करके इमीडिएटली भेजेंगे। थैंक यू। तो आशा है रोहित जी को अपनी समस्या का समाधान मिल गया है। और रोहित जी, आशा है आप जल्दी से जल्दी ईमेल भेजेंगे ताकि आपका जो कंसर्न है कि आपको किसी कारणवश जल्दी आपका ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम सेपरेटली आपका निकाल के अलग से भिजवा सकते हैं। इन एनी केस, जैसा गौरी जी ने बताया, हर दिन करीब 5,000 ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स डिस्पैच किए जा रहे हैं इग्नू की तरफ से। पर फिर भी जैसे रोहित जी की आवश्यकता है, अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो और उनको जल्दी किसी कारणवश अपना ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए हो, तो ईमेल भेजें। जो कंसर्न ईमेल आईडी है उसमें ईमेल भेजें, अपनी आवश्यकता, अपनी जो अर्जेंसी है वो क्लियरली स्टेट करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें और अलग से आपका ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकें। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ें और ये क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस तो शुरू हो चुके हैं वैसे, लेकिन अक्सर हमारे स्टूडेंट्स की ये कंसर्न रहती है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की तारीख कब आई कब चली गई हमें पता नहीं चला, या ये रहता है कि हमने लास्ट डेट मतलब वो लेट फ़ी वाली लास्ट डेट भी हमने मिस कर दी। ईमेल BDP result बस BDP result@ignou.ac.in। जी, ये रोहित जी के अलावा जितने और विद्यार्थी भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये उनके लिए भी है कि अगर किसी ने भी विद्यार्थी ने अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया है और उनको उनके रिजल्ट के बारे में या अपने ग्रेड कार्ड के बारे में कुछ हमें से जानकारी इस प्रोग्राम के अलावा बाद में भी लेनी है, तो हमें इस ईमेल पर वो लिख सकते हैं और हम उनको वह जानकारी इस ईमेल के ज़रिए प्राप्त करवा देंगे। गौरी जी, एक क्लैरिफिकेशन और मैं विद्यार्थियों की तरफ से लेना चाहूँगी। दिस BDP result email ID, is this and the email ID that any students can approach, because there will be students with other programs of Yes, yes. study. So if there are other email IDs which they have to write to, then maybe we should tell that. एक्चुअली हमने क्या किया था, इट इज़ ऑलवेज दैट रिजल्ट इज अ सिंगुलर वर्ड। हमने क्या किया था, MD रिजल्ट मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए MD result@ignou.ac.in, देन BA BSc BCom उनके लिए हमने क्या किया था, BDP बैचलर डिग्री प्रोग्राम BDP result@ignou.ac.in। बट इनके अलावा आपका कुछ प्रोग्राम और भी है, B.Ed है, देन BLS है, BLib, ये सारे प्रोफेशनल, BHM, ये प्रोफेशनल डिग्री के लिए हमने क्या किया था, खाली BD result@ignou.ac.in। अगर बाई चांस गलती हो गई तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन आपको जल्दी चाहिए तो आप करेक्ट ईमेल आईडी में भेजा तो हमें भी अच्छा होगा, आपके लिए भी जल्दी मिल जाएगा उसको। Thank you, Gauri Shankar ji. So I think this is an important point and all our students must make a note of it. If you need your grade card and provisional certificate urgently, then sending the email to the correct email ID will always be beneficial and helpful. Either ways, if we receive your email in another email ID, the concerned officials will forward it to the concerned person who will be dealing with your case, and you will get your grade card and provisional certificate eventually in the course of the normal functioning of the university. However, this is only to help you know that if we receive the email in the correct email ID, we can expedite your matter as per your requirements. And moving ahead from here, I would also request Dr. Bharat Bhushan now. I think some of the students, apart from the filling up of the examination form, the biggest concern that students have
during the examinations and prior to the examinations is that of the examination center. Choosing the examination center or being sure that you will get the examination center that you have chosen, and if for any reason you need to change the examination center, what is the procedure thereof and how certain can you be that you will get the examination center that you are asking for a change. These are the questions that we often face from the students' sides. So I would request both our experts on the panel to address these issues. First, I would request Dr. Bharat Bhushan to please address our students in terms of these questions, and then Gauri Shankar ji, I would like you to share your experience from the SED's perspective. जी थैंक यू भावना जी. In fact, nowadays our examinations are going on. They have started from 1st June and they will continue till 7th July 2023. And we are very happy that more than 9,25,000 students are appearing for examination in June term and examination 2023. I think till date it is the largest number of the students who are appearing as far as number is concerned for term and examination. It is a matter of great pride also, knowing the fact that this is the acceptability of the university, the credibility of the university, because it is brought to us from our students, none other than but our students. And when we say that these many number of students are appearing for the examination, you can think that how big is the system. To accommodate these many students, we have more than 842 examination centers spread all over India. These exam centers are spread from Port Blair to Leh Ladakh and from Kutch to Nagaland, Tripura in the far east of the country. And very successfully, with the help of our examination centers and colleges, study centers, regional centers, we are able to going ahead as far as conduct of examinations are concerned. When we say that how we can fill our examination form, and if our examination form is filled, because there itself in the examination form we select our exam centers also. Most of the students may be knowing it, that when they fill their examination forms, it is in that form itself they themselves decide that in which exam centers they want to appear. But even if they by mistake or by any reason, if they want to change their examination center, they are further allowed till the 7-8 days of the examination when it gets started. And in very pressing reasons, we sometimes we also consider the genuine request if somebody want their examination center changes in the at a very short notice also. I think Gauri ji will address this question very pinpointedly, that how far we can go ahead as far as change of examination in the emergency is concerned. थैंक यू डॉक्टर भरत भूषण सर. एक्चुअली आप सबको पता है इग्नू को अपना कॉलेज नहीं है. सो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम स्टडी सेंटर्स में एग्ज़ाम सेंटर बनाते हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स, all these renowned institutions are made as examination centers. See, आजकल all examination form fill up करना everything online, आप जानते हो. So online में क्या है, first come first served. That means आपको एक examination center में capacity 400 लोग है तो आप लास्ट डे तक वेट मत कीजिए, बिकॉज हम लोग 2 महीने तक एग्ज़ाम फॉर्म खोल रखे हैं. बट आपको 2 महीने तक वेट मत कीजिए, जितना जल्दी करेंगे आपको अपना सेंटर मिल जाएगा. नहीं है तो क्या करेगा, फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, फॉर्म तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट का समय
वो क्या करेगा, द फर्स्ट 400 कैपेसिटी मीन्स द फर्स्ट 400 पीपल विल बी टेकन and the capacity will be full and you will be given to the next center. कभी कभी नेक्स्ट सेंटर विद इन दिल्ली नो प्रॉब्लम है, बिकॉज दिल्ली में हम 60-70 एग्ज़ाम सेंटर्स है, बट आउटसाइड दिल्ली इन कोई डिस्ट्रिक्ट में ओनली 2-3 एग्ज़ाम सेंटर्स होगा. सो नेचुरली आपको 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर कभी कभी जाना पड़ेगा. सो ये समटाइम्स इट इज़ इनएविटेबल, इसको तो हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं हमारा प्रार्थना यही है, निवेदन है, आप जितने जल्दी करोगे उतने करेंगे. इमरजेंसी केसेस में जिसका मेडिकल जिसका मेडिकल है या जिसका स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग इन डिफेंस, दे आर गेटिंग इमरजेंसी ड्यूटी, ईडी कहते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी में आ गया तो उनके लिए हम कंसिडर करेंगे. आप अभी दोबारा इसके बाद जी एक कॉल आ रहा है. यस, हेलो. हाँ जी बताएं. हेलो. हाँ जी नमस्कार. हाँ जी नमस्ते. बताइए. जी मेरा क्वेश्चन था, एग्जाम से रिलेटेड था मैम. जी मुझे पूछना था कि मैं अभी जैसे बीसीए के लिए एग्जाम दे रही हूँ. बीसीए मेरा ये लास्ट मतलब ड्यूरेशन लास्ट हो रहा है ये 2023 जून में. जी तो मैम मेरा क्वेश्चन था, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर मेरा रह जाता है बाकी, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है क्या मैम? जैसे मैं, क्योंकि मैं 1-2 सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे पाई थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, तो ओके. उसको कंप्लीट करने का क्या उसका कोई भी अगर रूल्स वगैरह होगा तो थोड़ा सा क्लियर करके बताएंगे. तो आपका अभी वैलिडिटी ड्यूरेशन कितना बचता है? मैम ये जो मैं अभी एग्जाम दे रही हूँ ये मेरा लास्ट चांस था, मतलब अभी ड्यूरेशन ये पूरा हो जाएगा. अच्छा, तो आपका एनरोलमेंट कब का है? मेरा ये है मैम 2017. अच्छा जी. जो जुलाई मतलब जो दिसंबर ओके. वाले एग्जाम के लिए था. तो जून 2023 का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है ये आपका लास्ट चांस है. हाँ जी मैम. तो मेरे सारे सब्जेक्ट मतलब कुछ ही सब्जेक्ट बचे हैं, उनके ही मैं एग्जाम दे रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अगर कुछ एक आध भी अगर रह जाता है मैम तो उसका कुछ मतलब हो सकता है. या फिर तो एक रूल्स मैंने कहीं पे पढ़ा था मैम वो प्रोग्राम गाइड में, कि हम अगर बीसीए के ड्यूरेशन में ही अगर एमसीए में एडमिशन ले लेते हैं तो भी हमारा जो है वो एक्सीड हो जाता है, थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है ड्यूरेशन बीसीए के लिए. क्या ये अभी प्रोसेस है मैम? तो थोड़ा सा क्लियर कर देंगे. ठीक है. हमारे साथ हमारे स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस्टर गौरी शंकर, वो आपके सवाल का जवाब देंगे. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. एक्चुअली आपने सही कहा था, अगर आप इंटीग्रेटेड मोड में बीसीए एमसीए आ गया तो आपका और 2 साल मिल जाएगा. द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 years विल बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 8 years. आप अभी भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 साल अभी है. इसका मतलब एमसीए को इंटीग्रेटेड में ओनली 5 years है. 5 years का मतलब आपको एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेगा. 2 साल में इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट योर एमसीए आल्सो यू कैन टेक इट, और अदरवाइज आपको ओनली क्रेडिट ट्रांसफर करना है. अगेन यू हैव टू टेक फ्रेश एडमिशन एंड आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र, हम एक्चुअली क्रेडिट ट्रांसफ़र में एक छोटा सा प्रॉब्लम है. 17th के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा वेदर द सिलेबस हैज़ बीन चेंज्ड और नॉट. मोस्ट ऑफ द कोर्सेस में हम सिलेबस चेंज कर दिया है. सिलेबस चेंज कर दिया तो आपको 100% क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपको बीसीए एमसीए 15 में हमने रिवाइज किया है, उसके बाद 21 में एमसीए रिवाइज किया, बट बीसीए नहीं किया है. इसलिए आपको शायद आपको 100% क्रेडिट ट्रांसफ़र मिल जाएगा. उसके लिए आपको रजिस्टर srd@ignou.ac.in में यू कैन राइट एन ईमेल एंड गेट फीडबैक अबाउट योर क्रेडिट ट्रांसफ़र. बट इसी रोल नंबर में आपको करने के लिए अभी कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि एज़ पर यूजीसी's इंस्ट्रक्शन री एडमिशन वॉज क्लोज्ड. सो हम री एडमिशन आजकल नहीं करते हैं.
सो इसलिए आपको ये कर नहीं पाएंगे, इसलिए ट्राई टू कंप्लीट इट प्लीज़। अभी भी टाइम है, अगर चाहे तो 6 घंटे में भी यू कैन डू वंडर्स। सो प्लीज़ दिल लगा के कुछ दिन के लिए और कोई काम मत कीजिए, ट्राई टू कंप्लीट इट। दिस इज़ माई हम्बल request. Thank you, Gauri ji. I think the reply has been received by the caller. May I know if you are still on the line with us? Is the caller still with us? Okay, so it seems that the caller is not with us, but the point that Mr. Gauri Shankar you have made is very valid, since readmission is not being done by the university any longer because of the UGC regulations, and since the program syllabus of BCA has not changed after she took admission, it is likely that if she is unable to successfully complete her program during this period, that if she approaches SRD and tries to find out how many of her credits she is able to get transferred in the case of fresh admission, then she will be able to get the right guidance from Student Registration Division. I would request Dr. Bharat Bhushan, क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो एसएससी हमेशा फेस करता है। फ्लेक्सिबिलिटी पर ही हम अभी एक बार इससे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जी, कि स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत लिबरली यूज़ करते हैं जी, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप बहुत इसको जुडिशियस यूज़ करें, क्योंकि प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। 3 साल का जो प्रोग्राम है वो 6 साल में आपको कंप्लीट करना है। और जब आप फ्लेक्सिबिलिटी को एज ए राइट यूज़ करते हैं तो उसमें बच्चों को कई बार नुकसान होते हैं जो वो विजुअलाइज नहीं करते। मैं बताता हूँ उनको क्या होता है। अगर स्टूडेंट ने अपने जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें अगर वो नहीं जा रहे हैं तो बाय चांस उन्होंने 1 सेमेस्टर या 1 साल के एग्ज़ाम छोड़े, जब वो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में जाएंगे तो उनके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो विद्यार्थी भी ध्यान दें जो विद्यार्थी अभी हमारे स्टूडेंट हैं और अभी उनके पास टाइम अवेलेबल है। जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब उनके एग्ज़ाम होंगे उस वक्त उनका कोई भी पेपर, कोई भी कोर्स टाइम टेबल के हिसाब से ओवरलैप कर सकता है। कोई पेपर सेम टाइम में हो सकता है 10 to 1, और कोई पेपर उनका ऐसा हो सकता है कि वो 2 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे ख़त्म होगा, एक सुबह एक शाम। क्लैश का चांस। वो तो तब भी थोड़े बहुत लकी हो सकते हैं कि एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 1 बजे, फिर दूसरा एग्ज़ाम उनका 2 से 5 हो जाएगा। कभी कभी उनके साथ ऐसा हो जाता है कि वो दोनों जिन उन्होंने एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म भरा है उसमें वो दोनों ही पेपर्स एक ही टाइम स्लॉट में आ जाते हैं। तब विद्यार्थी हमें बताते हैं कि हम अब क्या करें, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। तो हमें क्या करना होता है, गौरी जी विल करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त हमारे स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और वो पहली बार अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको हमारा मेन टारगेट रहता है ताकि वो अकोमोडेट हों। जो बच्चे, जिन भी विद्यार्थियों के जो बैक लॉग बचा हुआ है वो जनरली ओवरलैप करते हैं, लेकिन उनको वह जो पेपर्स ओवरलैप कर रहे हैं वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में कोशिश कर सकते हैं कि उनको वो कंप्लीट कर लें, फिर भी उनके पास टाइम रहता है। इसलिए मैंने बोला कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बहुत जुडिशसली यूज़ करना चाहिए और उसको राइट की तरह नहीं तो हमारे जो प्रोग्राम हैं उसकी ड्यूरेशन उनके लिए कभी कभी कर्स बन जाती है जो नहीं बननी चाहिए। और ये हमेशा अच्छा भी रहता है कि जब जो काम होना है उसको तभी कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम, कई बार बच्चे अपने एग्ज़ाम दे देते हैं फिर कहते हैं मेरे तो रिजल्ट नहीं आया, मैं तो पास हो गया हूँ और मेरा रिजल्ट ग्रेड कार्ड में कम है। उन विद्यार्थियों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि जब आपका जो रिज़ल्ट है वो इन टोटलिटी दिया जाता है। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, एग्ज़ाम में आप पास हो गए हैं, तो क्या आपने आपके असाइनमेंट भी सबमिट किए हैं? अगर आपने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट वो पेंडिंग दिखाएगा, वो आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं आएगा। तो जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, जो जून के लिए करें या दिसंबर टर्म एंड के लिए,
तो जो बच्चे जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उनके जो असाइनमेंट्स हैं वो मोस्ट लाइकली मार्च में हम कॉल करते हैं कि आप मार्च में अपने असाइनमेंट सबमिट कीजिए। मार्च से लेकर वो जून तक डेट चलती हैं। इसी प्रकार जो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए हम नोटिफाई करते हैं अपने असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए समवेयर इन सितंबर। वो सितंबर में अपने असाइनमेंट सबमिट करें। और यह भी मैं बता दूं, अगर विद्यार्थियों ने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और बाय चांस वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो उनको दोबारा से असाइनमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने एग्ज़ाम पे ही कंसंट्रेट कर सकते हैं। बहुत बार विद्यार्थी पूछते हैं कि असाइनमेंट हमने दे दिए हैं लेकिन अब मुझे क्या दोबारा लिखने होंगे, तो उनको वो उस केस में दोबारा लिखने नहीं होते। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए और ये भी स्किप कर गया तब उनको दोनों दोबारा देने पड़ते हैं। ट्रांसफर केस उसमें दोबारा देना है जी। हाँ, उसमें दोबारा देना, वो दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट केस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स से एग्ज़ामिनेशंस और इवैल्यूएशन के विषय में आगे चर्चा करें, हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल और इसके बाद हम आपके पास वापस आएंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए और आपको वो सब जानकारी देने के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके पढ़ाई के, आपके हायर एजुकेशन के इस पड़ाव में। हम वापस आते हैं बस थोड़ी सी देर में। Do you wish to be part of a television studio like this or any other media system? Or already part of any media system want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOJNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills.
स्वागत है आपका। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके रूबरू आपके सवालों के जवाब देने के लिए और आपको वो जानकारी देने के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है अभी जब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशंस चल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर भारत भूषण, डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विस सेंटर, और मिस्टर गौरी शंकर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्टूडेंट एवेलुएशन डिवीज़न। एक बार फिर अंतराल के बाद आप दोनों का स्वागत है। हम एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड बातें तो कर ही रहे हैं आज, पर हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को और अपने विद्यार्थियों को कि हमारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ामिनेशंस चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी काम रुक गया। तो और बहुत कुछ साथ साथ में चल रहा है, एडमिशन्स चल रहे हैं, बहुत हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो मैं एग्ज़ामिनेशंस पे तो हम फोकस कर ही रहे हैं, मैं साथ साथ चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर भारत भूषण से कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे स्टूडेंट्स को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स दे दें ताकि कोई डेडलाइंस जो हों उनकी वो मिस ना करें। जी, जैसा कि अभी बताया डॉक्टर भावना ने कि यह प्रोग्राम एग्जामिनेशन स्पेशल है, लेकिन एग्जामिनेशन स्पेशल के साथ साथ जो दूसरी जानकारियां हैं विद्यार्थियों के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित, मैं उनको चाहूँगा तो वो थोड़ा शेयर करें। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में एग्जामिनेशन 2 बार होते हैं, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। इसी तरह से हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वह भी साल में 2 बार होती है। एक बार हम एकेडमिक ईयर के हिसाब से करते हैं, दैट इज़ जुलाई, और एक बार हम करते हैं कैलेंडर के हिसाब से जो जनवरी में करते हैं। जनवरी में जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो वो ऑलमोस्ट अप्रैल तक चलते हैं, और अब जुलाई में जो हम एडमिशन्स करते हैं वह भी जुलाई सेशन के लिए वो भी जुलाई अगस्त तक ऑलमोस्ट चलते हैं। तो अभी जो विद्यार्थी, क्योंकि अभी बहुत रिसेंटली जो 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हुए हैं, और जहाँ तक भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में जो जून जुलाई का जो सेशन होता है एडमिशन्स की प्रक्रिया के हिसाब से वही मेन माना जाता है। तो मैक्सिमम विद्यार्थी इसी वक्त ये डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा कोर्स लेना है 12th का रिजल्ट आ जाने के बाद। तो उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 सेशन का जो एडमिशन्स की प्रक्रिया है सभी पाठ्यक्रमों में वो जारी है, और उसके लिए अभी लास्ट डेट 30 जून 2023 रखी गई है। तो विद्यार्थी जो उनका पसंदीदा या जो उनका कोर्स है जिसको वो करना चाहते हैं उसको उसके बारे में जानकारी हमारे जो वेबसाइट है उसमें जो हमारा कॉमन प्रॉस्पेक्टस है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो उसमें उपलब्ध है। और कॉमन प्रॉस्पेक्टस पे जाने के लिए मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignou.ac.in, जब इसको क्लिक करेंगे तो ओपनिंग पेज पर ही जो आधा पेज है उसके नीचे सबसे पहली लाइन पे ही कॉमन प्रॉस्पेक्टस लिखा है। कॉमन प्रॉस्पेक्टस को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें विश्वविद्यालय जितने भी प्रोग्राम ओडीएल ट्रेडिशनल मोड में और ऑनलाइन मोड में जितने भी हम ऑफ़र करते हैं वो सारी जानकारियाँ उसमें उनको प्राप्त हो जाएंगी। तो आप विद्यार्थी यह जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और कॉमन प्रॉस्पेक्टस हमारा इतना डिटेल्ड बनाया गया है कि उसमें सारी जानकारियाँ करीब करीब उपलब्ध रहती हैं, और अगर विद्यार्थी उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई जानकारी उनको लेनी है तो हमारे जो टेलीफोन लाइंस हैं हमारे स्टूडेंट सर्विस सेंटर के या विश्वविद्यालय के जो एग्जामिनेशन एडमिशन के डिपार्टमेंट के हैं वो सभी टेलीफोन नंबर भी इग्नो की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष, मैं स्टूडेंट सर्विस सेंटर के जो टेलीफोन लाइंस हैं जहाँ से आपको कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है वो मैं अपने विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं 2957 2513 एंड 2514। ये दो टेलीफोन लाइंस मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 5:30 ये अवेलेबल होते हैं। ये आपके टेलीफोन पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा
अगर आपको राइटिंग में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। नॉट ओनली एडमिशन, विश्वविद्यालय की कोई भी जानकारी आपको अगर लेनी है तो जो हमारा ईमेल है ssc@ignou.ac.in, इस पर आप हमें मेल लिख सकते हैं और आपको जो भी जानकारी है उसमें उसको प्रस्तुत कराई जाएगी। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी हमारे अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनके ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, उनके लिए भी जो री रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वह भी इस वक्त चालू है और विद्यार्थियों को अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में या अगले सेमेस्टर में आने के लिए अपने को री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कई बार क्या कहते हैं विद्यार्थी कि मैंने तो एडमिशन ले लिया, मुझे तो कुछ अब कोई जानकारी प्राप्त हो ही नहीं रही है, मैं अगले साल के एडमिशन एग्ज़ाम दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। उन सभी विद्यार्थियों को बताऊँ कि हर साल और हर सेमेस्टर, जिनका सेमेस्टर सिस्टम है, उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, नहीं तो वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस वक्त वह प्रक्रिया जारी है और यह 15 जून तक जारी रहेगी। विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि वो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट डे को लास्ट आवर रश जो वेबसाइट पर होता है वो उसको फेस कर पाएंगे। और कईयों को ये तजुर्बा भी हुआ होगा कि जब लास्ट आवर में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हिट करेंगे तो वेबसाइट स्लो हो जाता है, उसका स्पीड काम नहीं करता। इसलिए आप बिल्कुल भी लास्ट डे, लास्ट आवर की इंतज़ार ना करें और जो काम ज़रूरी हैं उनको कंप्लीट करें, तो अपना री रजिस्ट्रेशन भी चालू कर लें। इसके साथ साथ जिन बच्चों के एडमिशन कंफर्म हो गए हैं और जिनके अभी होने बाकी हैं लास्ट डेट तक, उन बच्चों को कोई भी समय व्यर्थ किए हुए हमारे इग्नू की जो वेबसाइट हैं उस पर जो हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस हैं उसको ध्यान से पढ़ें। विश्वविद्यालय किस प्रक्रिया के तहत एग्जामिनेशन कराता है, क्या हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके बारे में जानकारी गैदर करें। इसके साथ साथ जब विद्यार्थियों के एडमिशन्स की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं वो सभी एक इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, जिसमें उस इंडक्शन प्रोग्राम में सभी विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि विश्वविद्यालय का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशंस कब होंगे, किस तरह से असाइनमेंट सबमिट किए जाएंगे, किस तरह से एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। तो वह उन सब बच्चों को उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है और उनका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो विश्वविद्यालय को उन्होंने एडमिशन के टाइम पर दिया था, उसमें यह जानकारियाँ उनको दी जाएंगी। तो अपने ईमेल को, जो ईमेल बॉक्स है उनका, उसको रेगुलरली देखें और अपने मैसेज बॉक्स जो विश्वविद्यालय उनको समय समय पर मैसेज देंगे उसको पढ़ें, तो वो फिर उनसे टच में रहेंगे। यह मैं जानकारी मैं अपने विद्यार्थियों ने चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारत भूषण। और हम इस जानकारी और इस बहुत महत्वपूर्ण अपडेट के बाद वापस चलते हैं एग्ज़ामिनेशंस की दुनिया में, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस अभी चल रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एग्ज़ामिनेशंस से संबंधित अपने विद्यार्थियों के साथ बांटना चाहते हैं। सो कंटिन्यूइंग इन दैट process, I would now request Mr. Gauri Shankar. Mr. Gauri Shankar, our students know that IGNOU is a university which practices inclusivity in almost every form. So, in the interest of our differently abled students, I would request that you let them know what provisions IGNOU makes for differently abled students to write examinations. For example, we have provision for scribes for students, and we take care of certain other measures for differently abled students in our examination centers. I would request you to please throw some light on this. Thank you, Dr. Bhavanaji. Actually, the university follows all the office memorandums issued by the Ministry of Social Empowerment from time to time. Accordingly, हम क्या करते हैं, जो भी disability student आ गया तो उनको we are allotting them sitting place only in the ground floor, वो भी near the entrance, because they will not be troubled to travel on foot or whatever it is for long.
number one. Number two, we are giving them the scribe if they needed, the scribe and the amenities, that is the fees for scribe. The prescribed fee is given by the study center to the scribe on demand. And number three, we also give 20 minutes for every 1 hour compensatory time. पहले it was called extra time, now it is called compensatory time. इसका मतलब 2 घंटे का पेपर मतलब उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं, 3 घंटे का पेपर मतलब उनके लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं. So this is on the production of the disability certificate. Please, that is the disability student may have given the certificate at the time of admission, but now the exam centers are not always the same, so they do not have the records. So इसलिए disability students के ये निवेदन है कि हर बार उनके लिए disability certificates carry करना पड़ेगा. Then only it will be easy. Otherwise वो डाउनलोड करके उनको करने के लिए और भी टाइम वेस्ट हो जाएगा. और ये है, और इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में we allow the students to even to bring the auto whatever it is inside till this thing, that is जिसके एक कदम भी नहीं रख पाता है. तो so we are all doing all sorts of support and cooperation to the people of the disabled as per the strict complaints of the office memorandums issued by the ministry, state government, central government, UGC, everybody from time to time, Court of Chief Commissioner for persons with disability. So right, and also I believe there is a process to be followed in case some students want to apply for the provision of a scribe for the exam. There is a process to be followed which they must be aware of if they have to apply. They can apply to their respective regional centers, or they can also send an application to the Student Evaluation Division. Right? So along with their medical certificate and the biodata of the scribe, and the scribe should not be overqualified. Right. That is, if the scribe is if the student is giving the examination of post graduation, the scribe must be a undergraduate. He should not be postgraduate, because postgraduate means he has already completed, whereas the student is undergoing. That means the scribe is already overqualified. So right. If the person is appearing for the BA exam, the scribe should be +2. Right. And they have to give the certificates also. देखिए ये सब नॉर्म्स हैं. लास्ट प्रोग्राम में एक कंप्लेंट आ गया था कि मैं एक स्पेशल स्टूडेंट वेंट टू एग्जामिनेशन सेंटर विद ए स्क्राइब. एग्ज़ाम सेंटर, कोई भी एग्ज़ाम सेंटर, जैसा गौरी जी ने बताया कि वो हमेशा नहीं रहते, चाहे हमेशा भी रहें. आपको जो आपका अथॉरिटी लेटर है टू फॉर ए स्क्राइबर, यू शुड कैरी दैट. उसके साथ साथ उसको एग्ज़ाम से पहले ही आपको अप्लाई करना है आपके रीजनल सेंटर से या हेड क्वार्टर से, ताकि आपको जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन कोई डिफ़िकल्टी ना आए. जहाँ तक जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं हमारे PWDs के, उनके एग्ज़ामिनेशन में सहूलियत की बात जो भी गौरी शंकर जी ने बताई, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सब विश्वविद्यालय फॉलो करता है. और हम ये इंश्योर करते हैं जब हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, कि वहाँ पर ये सब सुविधाएं उपलब्ध हों. और मैंने खुद अपने जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जब भी मुझे मौका मिलता है उनके निरीक्षण के लिए हम जाते हैं, देखते हैं. मैं देखता हूँ और मुझे खुशी भी होती है कि जो हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो सब सेंसिटाइज हैं इस मामले में, और उनके लिए जो सुविधा हमें उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं. और इस बारे में हम विश्वविद्यालय की ओर से अपने दूसरे प्रोग्राम्स में, एक और प्रोग्राम है हमारा संवाद, जिसमें हम PWDs के राइट्स के बारे में अपने विद्यार्थियों को आगाह कराते हैं. और जितने भी हमारे स्टाफ हैं, फैकल्टीज़ हैं, और जो हमारे रीजन सेंटर्स पे पर्सनल्स हैं, उन सबको भी हम सेंसिटाइज करते हैं. तो ये सब हम इंश्योर करते हैं. लेकिन विद्यार्थियों से जो PWDs हैं उनसे यह रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपनी ये सर्टिफिकेट्स एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही अपने कंसर्न RC से अप्लाई करके वहाँ से प्राप्त कर लें,
ताकि उनको लास्ट मिनट्स में डिफ़िकल्टी ना आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, स्पेशली हमारे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ ही एक और मुद्दा जो बहुत महत्व का होता है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल कंपोनेंट वाले प्रोग्राम्स हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स टर्म एंड एग्जामिनेशन के थ्योरी पेपर्स दे रहे होते हैं और उनके मन में साथ साथ ये चिंता भी चलती रहती है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कैसे देंगे, कब देंगे। तो उनकी जानकारी के लिए गौरी शंकर जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पे कि उनको अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की जानकारी कहाँ से मिलेगी और कब दिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स परेशान होने लग जाते हैं कि हमें तो देना है, हमने अप्लाई किया है, लेकिन इसमें जो डेट शीट है उसमें हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल नहीं है। तो लेट अस क्लैरिफाई दिस फॉर देम। थैंक यू। एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस इग्नो में एग्ज़ाम के बाद होता है। जनरली आप लोगों को पता है सीबीएसई और ये 12th स्टैंडर्ड का स्कूल सिस्टम में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को पहले होता है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में इग्नो में practical examinations are conducted after the examinations in the month of January for December exam and in the month of July for the June exam. And practical examination के लिए आपको date sheet will be issued by the regional center, और आपको रीजनल सेंटर आपको वैसे मेल भी भेजते हैं। कभी कभी मेल बहुत स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेशंस आर बीइंग कंडक्टेड बाय द स्टडी सेंटर्स and the students are supposed to attend the practical examination only in the same study center. So इसलिए हमारे prospectus में भी ये दिया है। साहब ने अभी बताया आप लोगों को, अभी डॉक्टर भरत भूषण, that is all the information is available in the prospectus, common prospectus. If a student goes the prospectus and program guide thoroughly, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं आता है 3 साल में आराम से, क्योंकि इग्नो का सिस्टम सच अ सिस्टम that everything is imbibed in that. If you go through the prospectus and this thing, then there will never be any problem. So prospectus में ये लिखा है that the students are requested or students are supposed to be in constant touch with the study centers. Right. क्योंकि study center is the real actual communication center between the student and the university. Because university के लिए आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, because everything ends there. Only when the person is not able to do at the study center level, he is coming to regional center, then where the cases of delay. If there is nothing, आप इसलिए study center से contact करो, लेकिन एक regional center के अंदर बहुत study centers होता है, इसलिए commonly it is decided by regional center. So अपना regional center will provide you necessary details regarding the date sheet and also the venue of your this thing, hall ticket, everything they will be giving you. क्योंकि hall ticket only from this examination we have started collecting for practical exams also. इसके पहले only खाली उसके लिए BCMCA के लिए लिया, अभी we are taking for BSc and everything only from this semester, but जिसका hall ticket will be issued by them. So आपको as soon as the exams are over, immediately आप संपर्क करें अपने रीजनल सेंटर। धन्यवाद। Thank you, Gauri ji. Along with the practical examinations, I think since you said आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो, आप immediately अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करिए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, बल्कि एग्ज़ाम चल रहे होते हैं और उसी दौरान इग्नू में इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है साइमल्टेनियसली। हम लगातार जैसे जैसे एग्ज़ामिनेशन कॉपीज़ हमारे पास आती हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स से, वो इमीडिएटली इवैल्यूएशन के लिए जाने लगती हैं। ये हम ख़ास तौर पे अपने स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हम एग्ज़ामिनेशंस ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू करने के लिए। इवैल्यूएशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली शुरू हो जाता है और फिर रिज़ल्ट के अपडेट्स ग्रेजुअली आते रहते हैं। जो स्टूडेंट्स री-इवैल्यूएशन करवाना चाहें, उनकी जानकारी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे गौरी शंकर जी? एक्चुअली हमारे यूनिवर्सिटी में री-इवैल्यूएशन का प्रोविज़न इज़ देयर,
बट आपको ओरिजिनल मार्क्स आने के बाद आपको रीवैल्यूएशन आपको 30 दिन के अंदर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको रीवैल्यूएशन रिजल्ट आने के पहले आपको इधर लास्ट डेट खत्म होने वाले होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ओनली ओरिजिनल इवैल्यूएशन के लिए आप वेट कर दीजिए। प्लीज़ डोंट वेट फॉर द रीवैल्यूएशन रिजल्ट। उसको बिना आप नेक्स्ट एग्ज़ाम सेंटर का वो हो गया तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर को यू प्लीज़ गो फॉर इट। आप ये मत पूछिए अगर मैं री एवेल्युएशन में पास हो गया तो मेरे 200 रुपये का नुकसान होता है। कभी कभी क्या करते हैं, लेकिन ओरिजिनल इवैल्यूएशन के लिए आपको पूरा हक है। मेरे को रिजल्ट नहीं आया, मैं इसलिए थोड़ा मेरे को वेव ऑफ करो, आपको वो अलग बात है। लेकिन आपको ओरिजिनल रिजल्ट एक बार डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद don't wait for the result of the reevaluation for the purpose of filling up your examination form. And we have also given it in the exam form also. Everywhere we have given. But in future also, it's my humble request that you please don't wait for your reevaluation result. Please go for it. Then only you will get the desired center also. Because जितना लेट होंगे आपके लिए सेंटर अपना सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि every center has got a capacity of 300, 200, 400. So if more than 400 students are आ गया तो first 400 will be allotted to that center, and beyond that it will be given to some other center. Right. So this is important, as Gauri Shankar ji had told earlier also in the program today and reiterated this now, that you have to apply for your examination form in a timely manner. And if you have applied for re-evaluation, for example for the June 23 examinations, and by the time your re-evaluation results will come out, there will be time for you to submit your December 23 examination form. Please do not keep waiting for the result of the re-evaluation, and go ahead and apply, submit your examination form for December 23. The other aspects will be taken care of in the interest of the students. The university always takes care of all the other concerned aspects. We are running out of time now. I am sure our students have a lot more questions concerning examinations, because going by the amount of the magnitude of queries that we receive at all levels, we know that our students would want to know much more. So before closing the program, first of all, I would like to thank our experts for today, Mr. Gauri Shankar from SED, Dr. Bharat Bhushan, Director SSC. Many thanks. And to our students, I would like to say, if there are any other queries, please feel free to contact the Student Evaluation Division and the Student Service Center at the email IDs that are provided on the IGNOU website. And there are also phone numbers on which you can contact us, or you can visit us personally if there are any issues you want clarification on. We would like to help you in any way we can, and we want our students to excel in whatever vocation they choose. With this aspiration, I would like to take your leave so that we can come back in the next program with another department or another school of study, and give you some more information which will be beneficial for your higher education. Thank you so much. Keep learning, keep growing. Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy,
sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Programs. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters program is graduate in any discipline. School also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyan Vani, IRC, Swayam Prabha and Swayam channel of IGNOU. For more detail, please log in to IGNOU website. For online admission in these programs, visit school site and also the Samarth online education portal of IGNOU. So please join these programs and fulfill your educational aspiration. We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in.
A warm welcome to IGNOU. If you are creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses. This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media, as well as the allied subjects of mass communication, which could be media marketing, advertising, public relations and corporate communications, event management. This can also help you become an entrepreneur in areas like photography or having your own production house and so on. So I hope that you will be excited to join this program, and we will be waiting to welcome you here in IGNOU. In the current global economy and digital era, learn or perish is the order of the day for all adults in all sectors of life. As a result, adult education and lifelong learning have assumed great significance. IGNOU as a national university has played its role by way of coming up with the Master of Arts in Adult Education program, MAAE. MAAE program focuses on different aspects of theory and practice, policies and programs, as well as research, among other things related to adult education. MAE is a 2-year modular program with multiple entry and exit options. Students who complete first year of the program will be awarded with the postgraduate diploma in adult education. In case they want to continue, they will complete the second year program and they will be awarded with the Master of Arts in adult education. MAE program consists of 10 courses, 5 courses in each year, 8 theory courses, 6 credits worth, and 1 practical course of 10 credits in the first year and 1 dissertation course of 10 credits in the second year. Practical course of MAAE is divided into 3 components, namely community-based practical activities, workshop-based practical activities, and adult education training center or institution-based practical activities. And the student has to complete all the 3 components for completion of this practical course. The minimum qualification required for admission to this program is bachelor's degree from any recognized university. The minimum duration is 2 years and the maximum duration is 4 years.
instructional system follows multimedia approach. The major medium of instruction is self-learning print materials, which is supplemented by other media such as audio video programs, broadcasting, that is interactive radio counseling, teleconferencing, personal contact programs or counseling sessions at the study centers, workshops and field work as well as internship at the institutional level. Those who seek out a master's degree in adult education have a myriad of career and specialization options. They can go further for higher studies, that is research in various fields of adult education, an adult literacy teacher, faculty in university departments of adult and continuing education, extension and lifelong learning. Field functionaries in the projects implemented by state and central governments as well as NGOs. For more details, you can log on to www.ignou.ac.in. Don't forget to take admission. Hurry up. Hello viewers, we are going to discuss the feminist approach of international relations. We know that how the feminism is important in the society, in the politics, in economics today in the era of globalizations. So look at this figure that progress matters in the society. You know, there's a lot of determinations who defined the feminist approach, the feminism in the society. What are the challenges, the issues for the feminist approach for the international relations? Why international relations going to think about the prism of feminism? Just look at this picture. The totally the 2 days in the era of globalizations, it impacts where is the status of the women in the society. If you look at sociological view, where is the stand the men and the women in the society? As we pre-assumed, men are oppressors, patriarchals, experience, reality, gender interest, conflict, gender knowledge, gender consciousness, gender inequality, plus male dominations, negotiation, many more things, the women's movement, other gender, gender experience. These words are very critical to define, think about the feminist approach of the political theory,
political science, and international relations. These the prominent theorists, the well-known theorists, they have some assumptions about the feminist approach of international relations. Suppose that the Kate Millets see one of the first challenge, the ideological characteristic of the both male and the female. She argues the female is born, but woman is created. So there is a difference between the female and the women. Second words, because once sex is determined at birth, but other gender is the social construct created by the cultural norms in the society. We can say women and the men conform to the social construct established by the society. If you look at the second one, the Ellen Sovelto, she says she is the American literary critics of a major representatives of the use of historical data and non-literary materials such as diaries, memorials, many more things, the understanding the feminisms in the world society in the perspective of international relations. If you look at this, the feminist theory is the broad visions, we know multi-directional school is there, includes many points, the differences, the several meeting points is there. Sometimes we know the feminist theory does not only focus the life of women. It is based on the social vision and the cultural issues created so-called the gender and the role of women in the society. Doesn't matter if the European society, American society, or the Indian society, third world society. Some feminists highlight discrimination and discrimination against the women, but they do not consider them as the victims. So who is the victim? The society in the international politics. You know, in the context of the war, conflict, role of women in the international society, role of women in the conflict management, peace building, that matters. So we can say sometimes it's to believe the social, political, and economic equality of sexes. Discipline of international relation is integrally linked to the rhythm of global political landscapes emerging as the academic discipline, especially in 1919, after the First World War, and then come to the horrors of the Second World War. IR theorizing methodological approaches, political attentions to focus on the producing effective knowledge about international realms. Feminist perspectives also entered at the international relations. Debate was taking place within the feminist theory itself. Some of the approaches, especially 90s, during the just like the end of the Cold War, they have explained women's subordinations or unjust asymmetry in the society, especially in the context of the equality, male and the female. Positions, power, hierarchy, binary of the sexes is there. If you look at the primary objective of feminist theory is to understand the existing social order. Many feminists believe in the market that discrimination and oppressions come into being, how to knowledge can be used to work towards transformations. Sometimes it is the liberal, many theories describe the liberal feminist, Marxist feminist, radical feminist, socialist feminist, psychoanalytic feminist. Right now we can show many more is there, the black feminist, white feminist, lesbian feminist, many more criticals is there. What kind of the gender context in the society, especially in the relation with the male and the female, sex and the gender. If you look at the IR feminist, many theoretical traditions is there. Sometimes it look at the decision making, literatures, voting and public opinions. It matters the what the women think in the society, especially the foreign policy, decision making in the international politics. That matters. Global economy, development, human rights, global governance, and democratizations. Feminism seeks to investigate stereotypes and bias based on the gender and beliefs. These are perpetuated by the patriarchal system. Identify contribution to important feminist scholars of the international politics, especially the feminist understanding the war, security, economic, and the global politics. Some thinkers' approaches is there,
what is the idea of the feminism in the international relations. We know it is contradiction in many cases. Critical theories aiming the study gender in international relations. We already know that what about the trajectories, what about the identity, the perspectives, the prism in the international context. Marxist, liberal, socialist, radical, black feminisms, post-colonial, environmental feminisms, existence culture. Cultures matter for the feminist approach of the international relations or global politics. There is empirical feminisms, analytical feminisms, many more the normative feminisms. They define the whole discourse of feminist approach of international relations. Despite of these facts, there is also waves of feminism is there. Most of the political theorists, the historians divide the three waves. First wave through the 19th century, through the 20th century. Second is the 1960s to 80s, and third one is the post-90s. And then the fourth wave, and the next wave is ongoing wave up to in the era of globalizations. Sometimes we say what were the outcomes, what was the fight for during the waves of feminisms. The first is the equality, differences, diversities, redefining the political patriarchy and sexisms, gender and sex, equality and differences. Sometimes world witness written against the discriminations women in the various regions at the various points of times. Suppose that in the United Kingdom, it is in 1759, the women's fight for the voting rights, women's rights that times. But right now, it's moved towards transnational feminisms in the era of globalizations. The first wave feminism are principally concerned with the women's material disadvantage compared to the men in the social, political, and economic reforms. Second wave is the politics, reproductions, experiences, sexual differences, sexuality, both as formed of the oppression, and sometimes they celebrate it. So there is a difficulty with the Anglo-Americans, European feminist literary theories, especially when I consider the period for the waves of feminisms. Transnational feminism is also different from the global feminism is there. Cross borders, transnational recognized inequalities, human differences, the frame, the border crossing, committed to activism, encourage dialogue to change. Many more things is there. But if you look at the feminist international relation theory, it covers postmodernist theories, stronger, longer links between the feminism and post-colonial studies. It is marked with the special issues, many conferences in around early 90s, especially focus on the liberal feminism to the post-colonial feminisms in the international politics. Yes, the concept of genders also challenged to the international relations theorists, especially the framework of the realist. Many more things is there. Gender structures of international organizations, women marginalized international organizations, security, decision making, sometimes development, international political economy, forced prostitutions and trafficking. You know, today many countries legalize the forced, there is no forced prostitutions, but it is the legalized prostitutions. But countries like the India and others, they still fighting for what kind of the framework of the legal framework of the prostitutions in the third world countries. Bringing women and their perspective into the international relations. We know the relevant effects, especially the fundamental players, economic and political process, societal decision-making process. Robert Cohen's engagement with the feminist theory is also there, the important positive contribution highlight the masculine conceptualization in the key international relations concept with the help of feminist redefinitions rather than understanding of the politics. There is a postmodern feminisms
like dangerous dead end approach which should not be pursued, problem that reject the scientific positivist epistemology. If you look at the prism of Cynthia Weber's good girls, little girls and bad girls, what are the perspective there? Who are the construction of the women's, the difference between the women's and the female in the society, the construct of genders and sexuality. Body into the several parts of erecting new boundaries. Textual mutations, feminist body, sense criminals to stand for evidence of author's attempt, murder of the feminist body. Many more things is there. How they express the feelings in the society, the femaleness, the characteristic of the women in the society, role model. Many more things is there. The categorical division of mind, body and sex and the gender. Sometimes in cooperation with the IR body is used for the further positivist scientific projects. Feminist holistic approach is there at the multiple strengths. We can say incorporations of feminist theory, international 90s, see IR textbook, epistemology, many more things there for world to recognize the role of women in the world society. Gender and the peace buildings, UN Security Council resolution is there for the women, peace and security in resolution number 1325. If you look at New Zealand's, many more, the women's leadership in politics, leading the country, a specific the context is there. But third world, the women's and war. Women are not major actors in the war. War is over, women are happy to return to the normals. Look at these figures, they define the different geographical identity of the women in the society. If you look at the what kind of the future of the feminist theory in international relations, we say science of international relations in 80s last century, critical questions of the founding assumption of the IR, raising the kinds of the issues, especially role, status of the women, especially consider of sociological perspective in the society. Feminist theory, post-positivist theory, they have taken a stand from the positivist theory, especially with regard to epistemological, ontological, methodological foundations about the reading the international relations. It rejects the foundations and assumptions upon the which positivist theories are based on the model of language. Feminism calls questions validity and relevance of human liberations projects. So finally, we say it is the important factors to determine international politics, society, economics, the feminist perspective of international relations. Thank you. Do you know that the world's population has reached 8 billion on 15th November 2022? And we are still counting. I don't know where do we go from here. The predictions are scary. Any idea how many people can Mother Earth sustain? India's growing population is a serious concern, and we are soon going to become the world's most populous country. Wow, number one. Population is, after all, a human issue. The UN proposed Sustainable Development Goals cannot be achieved unless and until we consider the population dynamics. So, here we are. Indira Gandhi National Open University offers appreciation course on population and sustainable development. The course explores the linkages between population and sustainable development.
In this course, there are diverse issues related to population, environmental safety, livelihoods, human health, migration, urbanization and much more. The course duration is 3 months, but of course, you can complete it within a year. The eligibility of the course is graduation from a recognized university. So, if you are a development professional, working in a government sector, researcher or keen to know more about the population and sustainable development, the course is must for you. Hurry up and join this course so that we are able to convert population into demographic dividend and not convert it into demographic disaster. For more information, visit www.ignou.ac.in. Thank you. Welcome viewers. Today our topic of session is advanced inventory planning and control, which is from your program postgraduate certificate in inventory planning and warehousing system for engineers. In the course 1, that is MWR01, Introduction to Inventory Planning and Control, you have studied about the fundamentals of inventory. What do you mean by inventory? What are the different forms of inventory, just like raw material, work in process inventory, finished product inventory, spare parts inventory. There are so many other types of inventory. You have also studied what are the functions of inventory, what are the objectives of inventory, and the most important thing is that why inventory should be maintained at any organization. You have also studied various ways of forecasting the inventory, because you need a forecasting method with the help of which you can estimate or you can predict what is the amount of inventory you must or an organization must hold. Then you have also studied various types of economic order quantity model, economic order quantity model, economic production quantity model, in which you want to calculate the most optimum quantity of the material which you want to hold. There are two types of cost. One is your holding cost and another one is ordering cost. If you keep the material in your warehouse, the cost is called as a holding cost or inventory carrying cost. When you order from the vendor, then it is called as the ordering cost, which include the office cost, cost of ordering, then the cost of rent of a office or the running cost of the office. In the storage cost or the holding cost, all the cost which is required to have for holding the material. So in today's session, which is a you can say advanced
Inventory Planning and Control, which is a MWR 002 of your program PGCI PWS. We are going to study about the materials management. Materials management is a wider term of inventory planning and control, where as under the inventory control or planning, you are only focusing about the control of the material which is required to come at the organization or a company for making a product so that the finished product can be delivered. While in materials management, you need to focus all the aspect of storing the material, stocking the material, procuring the material, and then finally even it is also concerned with the scheduling of operations, so that there is a minimum delay in the production. So that is the that is called as a materials management. In today's session, we will discuss about materials management. Then under materials management, there are two concepts. One is material requirement planning, that is MRP, and the second one is manufacturing resource planning, that is MRP second or 2. In today's session, we will focus on MRP, and more dominantly we will focus on the materials management. So after this session, you will be able to define the material management, you will be able to describe the objectives of MRP. MRP means material requirement planning. You will be able to explain inputs and outputs of MRP, state the objective, limitation and the benefit of MRP. And in today's session, with the help of a small example, we will learn how to prepare a bill of material. There are several other aspects of MRP, just like master production schedule, product tree structure, which product tree structure we will study today, because in MRP you need bill of material in which you will basically deassemble a particular product into different components. So with the help of a bill material, you will get a picture how many number, what is the number of each component required for a particular product. So if we focus on the materials management, which if you just see that slide, basically it is nothing but a supply chain function which runs through supply chain planning. There are two aspects of supply chain planning. One is supply chain planning and one is supply chain execution. First you will plan something and then you will execute something. It includes all functions with reference to material sourcing. Sourcing means you are procuring from where you need the material, then stocking, then serving, then safeguarding. Safeguarding means the material should not be destroyed. Then sending. Sending means it may be the work in process inventory, it may be the finished product inventory. When we call the work in process inventory, that means from one workstation to another workstation. When we say sending, it may be sending to the ultimate customer, or if there are tier 1 or tier 2 supplier, then tier 1 supplier to OEM, that is original equipment manufacturing. Now let us see another slide, that what is the objective of the materials management. Basically, objective of the materials management is to ensure the right materials are available at right time and in the right quantities to support the production process and to meet the customer demand, because our objective is to meet the customer demand for enhancing our brand value.
For that, we need that right quantity of material should be reached at right time, in right quantity, at right place. That is the objective of the materials management. Now we will focus on the what are the functions of the materials management. There are 4 functions. One is material planning and control, second is purchasing, and third one is stores management, and fourth one is inventory control or management. So we will study one by one. First, let us take the material planning and control. Under this heading, you need what you should plan for material, that how much material is required. For that, you need the forecasting. Then what is the requirement of material, what is the requirement of parts. Here I will like to emphasize that parts does not always means the raw material. You also need the equipment. Then preparation of material budget, because if you need the material, if you have identified the need of a material, then you need the budgeting of the material. There may be several vendors from where you will procure, what is the time and what is the cost of transportation, what are the different ways of procuring the material. So all these come under the budgeting of the material. Then we will forecasting the material inventory level, under which we will see that what is the maximum inventory level, what is the minimum inventory level, what are the reorder point, that comes under the forecasting. And the fourth most important point is the scheduling the order and the monitoring of the performance of material planning and control. Scheduling means scheduling the order, that if suppose there are 4 or 5 parts, then what will be the scheduling of the order. Suppose we need one part as a first, then second, third and fourth. So we will schedule the order so that each order or each quantity of material should reach at right time at right place. Now we will focus on the second function of the MRP, that is the purchase management. Under this heading, we will need the identification of the source. Then supplier evaluation. There may be 2, 3 or more supplier we have to evaluate, and then we have to decide which supplier or which number of suppliers should be used. Then finalization of terms and condition. Then planning order. We have to give the order. For that we have to make the order, and then we have to make the follow-up for that. Now we will come to the third function of materials management, that is called as the stores management. Under the stores management, there are several, because stores management itself is nowadays a discipline. And even in your course we have termed as a warehouse management. The first topmost function is the receipts, issue and the storage of material. You just see that in an organization the material has been received. Now the work is at the store. One has to prepare a record that this material has been received on this date, and then the store person has to issue the material. So for that they have to make the receipt, they have to make the issue register. All these things comes in the stores management. Then your prevention or the preservation of store, because you may have certain material whose life is very short, so you need to preserve it. Certain materials deteriorate with the weather and with the time, so you have to preserve it. And the third most is that it is the efficient handling and the disposal. That is the most important, because in the store there are so many items. Now from stores to the transport,
to carry to the desired place, you need a certain forklift system or forklift vehicle or e-vehicle. So proper handling is required so that material should not be damaged. And the fourth important thing is the maintenance of the store records, because only maintenance of store is not required, because every audit or every management wants that how much material is issued and how much material is remaining in the store. Now with the help of internet, with the help of the various advanced technology, RFID, radio frequency identification device, this is an automatically system, but still in the age of e-commerce or internet, we need a proper record system or master data system where we need a recording system or the record management under the stores. Now let us see the another function of the materials management, that is inventory control or management system. Under this, we need the selective control of materials. You must have studied about the ABC classification, under which A class material, B class material and the C class material, in which A class at the top, there are fewer in the quantity but the cost is more. B class is a moderate quantity and the moderate cost, while C category, it is a bulk quantity but the cost is less. So you have to make a proper system to manage the A class inventory as well as B class inventory and C class inventory, because you need frequently C class inventory. So the turnover ratio of the C class inventory is at a higher side. So you need to give proper attention for maintaining the C class inventory. Then you need determining the economic order quantity. Economic order quantity is one term, another one is economic batch order quantity, then third one is economic production quantity. Economic order quantity, the term comes there where you need to purchase the item. Economic production quantity is the term which is used for optimize the quantity of material which is produced inside the factory. So both are same but differ according to the just like if you are purchasing, if you are making, then it is a economic production. If you are buying, then it is economic ordered quantity. Another thing very important, you have to make a trade-off between the two costs. One is holding cost and one is ordering cost. The point at which the holding cost equal to the ordering cost, that is called the economic order quantity point, where both the costs are equal. Because if you increase the number of orders or increase the ordering cost, your holding cost will reduce but ordering cost will increase. But if you reduce the ordering cost and if you are making a bulk order, then your holding cost will increase but ordering cost will decrease. So you have to optimize, and the point where both are equal, that is called the economic order quantity point. Another important point is under inventory control or inventory management is the fixing level of safety stock or the reorder level. Safety stock is that stock which we keep for meeting the uncertainty. Suppose our vendor is at Bangalore and the lead time is 3 days. Just because of any disruption during transportation, lead time increases from 3 to 5. Then you need a quantity which serve the purpose during these 2 days. That is called as the safety stock. Safety, that means the stock which is required as a safety. Another point is called as a
reorder level. Reorder is the level is that at which you will make the order to get the material to reach the maximum level of the inventory. And the most important point is the lead time analysis, because your whole process, your whole operation depends on the lead time. So that is called the lead time, that in many calculation, in many books, even in the calculating the lead time, we consider the safety stock and also the some uncertainty index. On the basis of that, we calculate the lead time as well as the reorder level. Now, how you will define the materials management, or what is the planning of the materials management, or under materials management, one of the important topic is MRP, that is the material requirement planning. Under the material requirement planning, there are three terms which are frequently used. One is called as the bill of material, second one is master production schedule, and third one is the line of balance. So when you have, first you have to prepare the bill of material, then according to the bill of material you have to make the master schedule so that you can maintain the line of balance. Line of balance means there should be match between supply and the demand. Or demand means at the production side, supply means from the supplier to the company. Now, when we have the MRP, that is the materials requirement planning, we need to identify what are the objectives of the MRP. MRP means it is an open system, whereas manufacturing resource planning, MRP2, is a closed loop system where all the feedback is provided so that you take the account of feedback and then you reframe your policies or the strategies. Under the material requirement planning objective, we want to ensure the required material should be available, we want to maintain the lowest possible material, and we want to plan the production activities, delivery schedules, and the purchasing activities. Now, these are the three important functions of MRP, that is inventory management, cost reduction, and the production optimization. With the help of inventory management, with the help of the cost reduction, we need to optimize the production. When you have a proper inventory system, you can optimize the production. Now let us see what are the inputs of MRP. As in the first slide, we have provided you that these are the topics which we are going to cover. So in which first one is your materials management, then objectives of MRP, then we are coming as the inputs of MRP. The first important point of MRP is the customer orders. Now when we talk about the customer order, it is specific to the information which we receive from the customer. Because there may be a regular pattern, there may be a irregular pattern, but we work on the customer order. Then forecast demand. Under the forecast demand, we need to predict how much will be the probable demand for a product or the service. When we talk about a manufacturing industry, it is a product. When we talk about the service industry, just like bank or hotel, then it is a service. On the basis of the forecast demand, which depends on the historical data or the present trend, just like if you want to have the forecasting demand for the refrigerator, we need to have a 5-year or 5-season data, that what is our sale demand. Then we need a master production schedule. It is also a type of a input for MRP. Under the MPS system, we need to schedule the customer orders into a master production schedule, so that as per our material availability, we will have the master production schedule, so that we
should not delay in the customer demand. There should not be delay in any customer demand. So that is the beauty of the master production schedule. Earlier what was happening, that we do not have the master production schedule, and we haphazardly were doing the production of the material. So while with the help of bill of material, with the help of a master production schedule, we schedule our whole production. Then basically if we say it is a comprehensive schedule, it gives you the list of end product to be produced within a given period. Now inventory records. We need to have a record file for gross requirement of material, schedule of the material, as well as we need the details of supplier, its lead time and the lot size. That all comes under the inventory record. Now we will come to the most important part of the session, that is called as the bill of material. It is nothing but a comprehensive list of the components for a particular product. In the bill of material, it gives the list of parts or component required for producing the final product. It also gives you the required quantity. Sometimes it also gives the lead time for each material. So if you just see that, it will give you a product structure tree. So today, with the help of a small example, we will try to understand what is the bill of material. Our problem is like that. Product is M. It has two components, N and P. The number of units is 2 and number of units is 3 for component B, for making a 1 unit of product M. Component N is again composed of 2 unit of R and 4 unit of S. Similarly, component R is made of S and T, and P is made of unit T and U. If suppose you want to make 100 units of M, so what is the number of each sub quantity? Now just see that we have prepared a product structure tree for you. Just like at the top you will see M1. M1 is composed of 2 component N and P. Then N is composed of 2 subcomponent R and S. P is composed of 2 subcomponent T and U, and R is again subcomponent S and T. Now in this slide you will see that we are calculating the number of component if M is equal to 100. You will see that if for one quantity you need 2 quantity of N and 3 quantity of P, you have calculated on the basis of this structure. So what are the benefits of bill of material? Basically it gives you a systematic plan of a product. Output of MRP is purchase order, master plan and work order and the reports. If you just see that purchase order, it includes that the material which you want to purchase from the vendor. Master plan give you the details of the material. Work order means which is the final product. And the report, there are 2 types, primary and the secondary report. So in today's session, we have studied about the materials management. What are the objectives of materials management? What is MRP? That is materials requirement planning, which is an important component of materials management. What are the inputs of MRP and what are the output of MRP? And under the input of MRP, we have understood bill of material, which is an important part of MRP. So I trust that today's session must be helpful and provided you a useful learning insight for understanding material requirement planning
which is an important component of your course MWR2 of program Postgraduate Certificate in Inventory Planning and Warehouse Systems. Thank you.